क्या भारतीय अंडर 19 टीम आज इतिहास रच सकती है? अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल जारी है इस वक्त 235 फॉर 7 ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 अगेंस्ट इंडिया अंडर 19 जस्ट वन बैटिंग इनिंग्स अवे फ्रॉम दैट हिस्टोरिक विन एट द अंडर 19 वर्ल्ड कप। आई एम रोहन देशमुख, मेरे साथ इस वक्त है ESPN क्रिकेट इन्फो के इंडिया एडिटर जॉर्ज बिनॉय। जॉर्ज, देखा जाए तो वन बैटिंग इनिंग्स इज व्हाट इट विल टेक फॉर द इंडिया अंडर 19 टीम टू गेट दैट टाइटल, लेकिन ये सिर्फ दूसरी बार है टूर्नामेंट में जहां पर भारतीय टीम जो है चेस कर रही है। इट्स गोइंग टू बी एन हिस्टोरिक इनिंग्स फॉर द इंडियन अंडर 19 टीम, isn't it? Because you win the under 19 World Cup and you get a lot of accolades coming your way. Yes, it is the biggest match of their young lives so far. India have played Australia twice before in the under-19 final. In 2012, I think Unmukh Chand scored a century in the final for them to beat Australia. In 2018, I think Manjot Kalra scored 100 in the final to beat Australia. So Australia are almost up to 250 now. So the opportunity is there for someone, to follow in those footsteps and complete a historic chase later today. It's going to be challenging. The conditions are overcast in South Africa. Australia are playing with an all-seam attack. But India have shown that, there was a big question over whether they could chase and win in this tournament. And they proved that against South Africa in the semi-final, overcoming a very nervy start. They showed a lot of, character and confidence in the middle order, their captain and Sachin Das. So yeah, it's going to be a, fantastic second innings to watch. The thing is with these sort of totals, like, India are going to bat really well and chase it down, or it's going to be a really tense and tight chase to watch. So either way, I think we're in for a great 4 hours coming up. देखिए, एक टाइट चेस तो हो चुका था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेमीफाइनल में, और वैसे देखा जाए तो भारतीय अंडर 19 टीम ने काफ़ी डोमिनेट किया है इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक। होप करते हैं कि फाइनल में जो है एक तगड़ा जो है जवाब दे भारतीय टीम जब उनकी बल्लेबाजी करने हैं। और ग्रुप स्टेज में देखा तो सीधी तरह से 84 रन से बांग्लादेश को हराया, उसके बाद 201 रन से आयरलैंड को और USA को भी मात दे दी थी भारतीय अंडर 19 टीम ने। और फिर सुपर 6 में जो है भारतीय टीम पहुंची थी और वहां पर न्यूजीलैंड को एक बड़े मार्जिन से हराया और फिर नेपाल को भी 132 रन से हरा दिया। और ये जो मैच था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये भारतीय टीम यहाँ पर जो है चेस करते हुए जीती थी। इंडियन टीम ऑब्वियसली वाज इन ट्रबल, बट ऑब्वियसली इफ यू सी जिस तरह से कैप्टन उदय सहल ने जो वो पारी खेली, ही हेल्ड द इनिंग्स टुगेदर, उनसे हमने बातचीत की इस फाइनल के पहले, और किस तरह से इंडियन टीम डिटरमाइंड है इस फाइनल को जीतने के लिए। आइए सुनते उनसे। पहली बात तो सेमीफाइनल बहुत टाइट था हमारा, और हमें बहुत अच्छा हुआ, हमारी टीम का नीचे से भी पता लगा कि टॉप आउट हो गए थे, 4 आउट हो गए थे, जो रन बना रहे थे वो आउट हो गए थे, लेकिन स्टिल हमारी टीम में इतनी कैपेसिटी थी कि हमने 260 चेज़ कर दिया, 250 और 260 जो भी था वो चेज़ किया। और उसके बाद भी मतलब हम लोग इजी जीते, ऐसा नहीं था कि हमें बहुत किया कि बहुत प्रेशर आया था, बहुत ये नॉर्मल गेम थी, जीते। अच्छा किया सबने, बॉलिंग बहुत बढ़िया हुई, सब कुछ अच्छे जगह पे था। इवन साउथ अफ्रीकन बैटर्स बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, स्टिल हमारे बॉलर्स ने बहुत बढ़िया कंज्यूम किया मिडल ओवर्स में आके। तो बस यही सब आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मुझे लगता है कि हम अपने बेसिक्स पे ही स्टिक करेंगे, जो हम पहले से करते आ रहे हैं वही हम वापस करेंगे। प्रिपेयर भी वैसे ही कर रहे हैं हम लोग, और बस उसी पे स्टिक कर रहे हैं। मैं अपना बताऊं तो मैंने बहुत सारे प्रेशर गेम्स खेले हैं, बहुत सारे गेम्स निकाले हैं ऐसे, और बहुत मतलब नीचे क्लब क्रिकेट्स खेल के हुए, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, स्टेट, और सब मैंने अपनी टीम के लिए बहुत ऐसा काम किया है। तो मुझे पता है कि कैसे रिएक्ट करना है, सामने वाला कैसे सोच रहा होता है, बैट्समैन सामने क्या सोच रहा होता है। तो बस मैं यही सोचता हूँ कि जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं पास करूँ उसको, कि अगर उसको हेल्प हो जाए, सामने बैट्समैन को हेल्प हो जाए, और अब मेरी टीम को जितना हेल्प हो सकता है, मैं मेरी टीम के लिए जितना कुछ कर सकता हूँ, बस मैं वही करने की कोशिश कर सकता हूँ।
मेरे पापा जो कोच है मेरे, वो शुरू से मुझे यही कहते थे कि हमेशा अपने डीप लेके जाना है गेम को, जितना हो सके डीप लेके जा। ऐसा नहीं है कि जल्दी करके, आजकल का टाइम ऐसा है कि शॉट मारते हैं, जल्दी ख़त्म करने को जाते हैं और सब, लेकिन मेरे पापा यही कहते हैं कि थोड़ी ओल्ड स्कूल सोच है, लेकिन यही है कि डीप लेके जाना है, जितना हो सके गेम लंबा लेके जाएंगे, क्योंकि जितनी देर तक विकेट आपके हाथ में है आप लोग कोई भी रन चेज़ कर सकते हो, क्योंकि इस समय ऐसे बैट्समैन हैं हमारे पास भी और हर जगह पे कि जितना लंबा लेके जाएं, और बैट्समैन अगर विकेट पे खड़े हैं तो कोई भी रन चेज़ हो जाते हैं। फ़िटनेस के मामले में मैं बहुत हमेशा से ही सोचता था कि फ़िटनेस अच्छी होनी चाहिए, ऐसा और सब। फिर विराट कोहली ने वो इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडियन टीम में इंट्रोड्यूस किया कि कैसे फ़िट होना चाहिए, कितना बड़ा वो डालती है गेम पे, कि कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है उस चीज़ से। तो मेरे को बहुत इंस्पायर की उस चीज़ ने, और फिर मैंने वो फॉलो भी किया कि फ़िटनेस से, और मेरे को बहुत अच्छे अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिले। ऐसा नहीं है कि अगर आप फिट हो तो ऑफ कोर्स आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते ही हैं। दूसरी बात ये है कि वो जैसे गेम को लंबा लेके जाते हैं और अपनी टीम के लिए खेलते हैं, जैसा उनका पैशन है कंट्री के लिए, बस मैं वही कोशिश करता हूँ कि मैं भी उसी प्रोसेस से चलूँ और वही सोचूँ सब। यस, काफ़ी इंस्पायर्ड है इंडिया अंडर 19 के कैप्टन विराट कोहली से। और इस वक्त जो है इंडिया अंडर 19 टीम को जो है इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा टारगेट उनके अगेंस्ट जो है वो चेस करना पड़ेगा टू विन दिस फाइनल, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज ऑब्वियसली स्कोर्ड एटलीस्ट 247 for 7 in 49.3 overs, so this is obviously going to be the highest total that Indian under 19 will have to chase in this tournament. बात कर रहे थे किस तरह से विराट कोहली इंस्पायर कर रहे हैं उदय सहारन को, लेकिन विराट जो है इस टेस्ट श्रृंखला में इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट श्रृंखला हो रही है वो नहीं खेलने वाले हैं. Let's have a look at the squad graphics now. If you look at the squad, clearly you can see that Virat Kohli is not going to be there. He's missing due to personal reasons. लेकिन श्रेयस अय्यर भी जो है इस पूरे स्क्वाड में मौजूद नहीं है. We see Ravindra Jadeja coming back. We also see KL Rahul coming back. लेकिन दोनों जो है they are subject to fitness. कि किस तरह से जो है उनकी फिटनेस मेडिकल टीम तय करती है if they are fit to play or not. उस हिसाब से जो है उनको स्क्वाड में लिया जाएगा, प्लेइंग 11 में लिया जाएगा. Akashdeep Singh comes into the squad, but Avesh Khan goes out. We don't know really what happened to Avesh Khan. He was there in the squad, लेकिन उनको जो है बाहर करके आकाशदीप सिंह को लिया गया है because the captain and the selectors were impressed with the way he bowled against the England Lions. Then मोहम्मद सिराज भी वापस आ गए and obviously जसप्रीत बुमराह जो है उप कप्तान जो है उन्हें डेजिग्नेट किया गया है. जॉर्ज पूरे स्क्वाड को अगर हम देखें तो there is a good opportunity for someone like KL Rahul, Rajat Patidar, if Sarfaraz gets an opportunity in the playing 11 for Sarfaraz and for Shubman Gill, really in the absence of Virat Kohli, to stamp their authority, to ensure that prove the kind of backing that they have got from the team management to really come true to their talent and grab this opportunity really for. Yes, absolutely. With KL Rahul, hopefully, subject to fitness, he was included in the squad. Hopefully, he will play, and if he plays, he will come in for Shreyas as a straight swap. He was really good in the Hyderabad test, probably India's best batter in that match. So that will, strengthen that Indian middle order quite a bit if Rahul comes back. In the event that Rahul somehow doesn't make it back, then Sarfaraz will probably get his opportunity that he's waited for like years, and I can't think of any batter who would be hungrier than Sarfaraz to make use of his opportunity. Patidar looked decent in his 2 innings in Visakhapatnam, like we saw a few good shots that he played. He looked quite composed in the middle, short innings as they were. Hopefully he's going to get another chance most likely, and it's there for him to take. Shubman Gill needs to cash in on the form that he found in Visakhapatnam. I'd be very surprised if he gets as much luck as he did in that second innings in Visakhapatnam. So now he'll have to show a lot more application and make his opportunity at number 3 count. And obviously, George spoke about KL Rahul, coming back if he's proven fit by the BCCI medical team. He's already started practicing. There you go. Just a few hours ago, he's posted this
visual on his social media account, and this is the NCA in Bangalore where he started practicing. So it's a good sign, George, that he is back in the nets, and obviously he'll have to undergo a fitness test before coming into the playing 11. लेकिन दूसरे एक खिलाड़ी की बात की जाए श्रेयस अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर will be thinking, okay, now he had an opportunity, but got the starts, was not able to count on those starts, not able to make big scores. What does former India cricketer Sanjay Manjrekar thinks about श्रेयस अय्यर की उन्हें अभी क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी गेम पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और कैसे कम बैक कर सकते हैं इंडियन टीम में, आइए सुनते हैं. Tough for these young players, young batters in today's the cricketing landscape that we have, where they have to be good in 3 formats. So T20s, 50 overs, he seems pretty good. He had a very good World Cup as well. And while you're working, on the skills required for T20s and 50 overs, whether you like it or not, and it's unavoidable, you are actually diminishing your test match skills. So your improvement in wide ball cricket, batting especially, comes at the cost of your test match batting, which is mostly about leaving balls outside the off stump and playing close to the bat. 2 things that you would never want to do in T20. So he has to decide, which are the format that he's going to try and excel in. And test match continues to be his priority, number 1 priority, or one of the main priorities. Then he's just got to work on his defensive game, whether it's pace and bounce or whether it's spin. Just develop a game where he's confident in defense, and then when he takes the aggressive route, it's like an extension of his defensive play, where he's trying to dominate and not try and escape pressure or release pressure by playing the counter attacking game. The George, श्रेयस इज एन इंटरेस्टिंग केस, क्योंकि इस सीरीज के पहले जो है वो रणजी ट्रॉफी भी खेल चुके थे. रणजी ट्रॉफी मैच वो जाके खेले थे. उसके बाद जो है भारतीय टीम में आकर उन्होंने जो है परफॉर्मेंस जो दी है, ऑब्वियसली नॉट बिग स्कोर्स, गॉट स्टार्ट्स, डिडंट स्कोर मच. लेकिन अगर आगे देखा जाए तो यू ओनली हैव द IPL, एंड आफ्टर दैट in terms of टेस्ट मैचेस तो साल के अंत में है, तो काफ़ी वक्त है इफ़ ही वांट्स टू पेव हिज वे बैक इनटू द इंडियन टेस्ट साइड. लेकिन इट्स अ क्यूरियस केस ना, बिकॉज देयर वर क्वेश्चंस कि वो इंजर्ड है, लेकिन एज आर कलीग्स रिपोर्टेड ऑन ESPN Cricket Info दैट ही वाज डिक्लेयर्ड फिट, लेकिन जो है उन्हें पिक किया नहीं गया. Yeah, but Shreyas, see, there's obviously some issue with his body as well. The reports of his fitness, probably weren't completely unfounded, because, he said that he had experienced a spasm and, was having trouble playing the long innings in Visakhapatnam. And sometimes, maybe if you are not completely confident in how your body is, holding up, you might make bad decisions in the middle. But yes, I agree with what Sanjay Manjrekar is saying, that it's very hard for a batter to be good in all 3 formats. You see very few of them in this modern game who are, who play all 3 formats, Test, T20 and ODIs, and are good at all of them as well. It's very rare. In each country, if you look around, there's probably just 1 or 2 people who command such a place in all 3 sides. So yes, and if you remember before the series, Shreyas made, I think he said a line where he said, if I leave a ball, it would bore me if I keep leaving balls. So when he plays such a game, the risk factor does increase, and then that's probably why you see him get out after getting off to starts every often. He gets into the 20s, and then because he keeps playing that attacking game, the risk factor stays high, and then eventually he gets out. So he's going to have to find a way. But the fact is, most test match cricket around the world is played like this these days. The batters are being more positive, looking to score. So you see people playing like Shreyas all around the world. There are only a few test specialists who have that sort of gritty application, like the Pujaras and the Viharis used to have.
the batters like Shreyas are the more common type of batters these days. So he's just going to have to find a way to make better decisions once he gets set, so that he doesn't give away his start. वेल एटलीस्ट देयर इज वन प्लेयर जो हमें पता है कि वो तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन प्लेयर है. इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट दैट इंडिया हैज़ वो है रविंद्र जडेजा, एंड दैट रविंद्र जडेजा इज कमिंग बैक इनटू द टेस्ट साइड. ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू फिटनेस, दैट्स द वर्ड विच बीसीसीआई हैज़ यूज्ड. Who will, make way for him? Who will Ravindra Jadeja replace in the squad? Here's Sanjay Manjrekar with the answers. If Mohammad Siraj wasn't available as your second seaming option, then maybe it would have been easier for India to stick with four spinners and go the English way, like they have committed to just one pace bowler. But because Mohammad Siraj is available, and we've seen this ball that we have in the series do something for the seam bowlers. You see reverse swing, which is creating some opportunities for the fielding side, and just the way England have played the finger spinners, India might stick to two seam bowlers, and I see one finger spinner making way, which means Akshar Patel, because I don't see Kuldeep Yadav being left out if they have to leave out one spinner with Jadeja available, purely because of Kuldeep's impact in the last test match, plus a more difficult bowler to reverse sweep and all those kinds of assortment of sweeps that we have. Always Kuldeep finds himself in this kind of situations ना. जॉर्ज हमेशा परफॉर्म करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उनको टीम में जगह मिलती नहीं है. क्या ये is it valid now to have Kuldeep in this squad, considering that he is your only leg spinner in the side, and also for the fact कि आपके पास रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल can be someone who can make way for Ravindra Jadeja, as Sanjay Manjrekar said, क्योंकि कुलदीप का इस टीम में होना काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्रूव भी किया, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो है शॉट मेकिंग भी डिफ़िकल्ट रही है इंग्लैंड के लिए. Absolutely. If you remember Kuldeep, in Chittagong in December 2022, he took 8 wickets in the match, in a test match there, which India won. And I think he was player of the match also in that match. And then he didn't play another test for more than a year, because when India are playing away, they don't need Kuldeep, and at home, Akshar was playing ahead of him. See, I think India are likely to go with Kuldeep, given how well he bowled in Visakhapatnam, and Akshar might sit out. The only factor to take into consideration is that if the pitch in Rajkot turns out to be a rank turner, for example, then they might decide that Akshar's batting adds value, and with his bowling on a rank turner, he can take wickets as well. But I think if the pitch is like the Visakhapatnam pitch, which is a more traditional pitch, which was decent for batting on the first 2 days, and then slowly it begins to take more and more turn, then I think Kuldeep will be preferred over Akshar, because his wrist spin and the bounce he generates will pose more of a threat to England's batters than Akshar's bowling, and India will trust their top 6 to score runs on a decent batting surface. जॉर्ज और एक बात ये जो स्क्वाड में जो हमें दिखाई दी कि काफ़ी देवर रिपोर्ट्स दैट बुमराह में भी रेस्टेड, पॉसिबिलिटी है आगे 3 टेस्ट मैचेस, 3 में से एक में रेस्ट भी मिल सकता है, लेकिन ही इज़ ऑब्वियसली देयर इन द साइड एज अ डेजिग्नेटेड वाइस कैप्टन, बिकॉज बीसीसीआई ने तीनों टेस्ट मैचेस के लिए जो टीम अनाउंस की है, साथ में सिराज की भी वापसी हुई है, और आकाशदीप सिंह को मौका मिला गया है ना. आकाशदीप सिंह हैज़ गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू कम इन टू द स्क्वाड टू ट्रेन विद द इंडियन टीम, but we also see Avesh Khan going out. I mean, there's nothing wrong which Avesh Khan did, right? But it's great that Akashdeep has got an opportunity. But it's an interesting thing. Possibly looking at Akashdeep as a player which the Indian team management sees that उनको groom कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो अक्सर देखा है कि कोई नया खिलाड़ी आता है तो काफ़ी वक्त जब इंडियन टीम सेटअप में जो he spends, so there's a lot of learnings that he takes and he goes away. Do you think this is probably one kind of a move similar in that direction, where they're looking at Akashdeep as someone who's earmarked for the future? So Akashdeep is just coming off India A series against England Lions, where he was, I think the highest wicket taker. He had a good
first class outing against them. And I think they just brought him into the squad, as you said, to give him some exposure to the Indian team environment, train with the team, pick up some tips from Bumrah and Siraj, and see how it goes for him. And Avesh, he's been with the squad, and as you say, yeah, it's odd that he was released without getting a game. But they probably, realistically, there's not much chance of Avesh playing because there's Bumrah and Siraj, and then there's Mukesh as well. So maybe him having already spent some time with the squad, now it's time for him to go and play some Ranji Trophy again, get more game time under his belt. Whereas they can bring Akashdeep into the squad to give him that experience of being in this team environment as well. I think, yeah, I don't really think that Akashdeep is near test selection at the moment. But yeah, because he's like the third or fourth pacer behind Mukesh Kumar. But yeah, it's a good opportunity for him. He's done a lot of hard work in domestic cricket to earn this call-up. All right, George, thank you very much for joining us here on Follow the Blues Live. ये बात कर रहे थे हम इंडिया स्क्वाड की जो कि इंग्लैंड के खिलाफ अनाउंस किया है, लेकिन वहाँ पर हमारे अंडर 19 के लड़के जो है बॉयज़ इन ब्लू दे आर चेजिंग अ टारगेट ऑफ 254. ऑस्ट्रेलिया में 253 for 7 in their 50 overs, and India 254 runs away from a world title. Thank you very much for joining us. कल फिर मुलाकात होगी आपसे 5 बजे फॉलो द ब्लूज लाइव पे. Till then, thank you.